गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बिल्किस बानो केस। तो इसमें आपके पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स आपके कवर होंगे। तो अब गुजरात गवर्नमेंट ने 15 अगस्त को 11 कन्विक्ट्स जो कि बिल्किस बानो मर्डर और गैंगरेप केस में दोषी थे, उनको जो है वो रिलीज़ कर दिया है। उनको रेमिशन दे के प्री मैच्योर रिलीज़ कर दिया है। तो पहले तो देखते हैं केस क्या था। तो स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 2008 में मुंबई में इन 11 कन्विक्ट्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी थी। अब हुआ क्या है कि ये कन्विक्ट्स ने लगभग 15 साल की जो सज़ा है अपनी काट ली है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है एक उसमें से एक कन्विक्ट ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली दाखिल की थी कि हमें प्री मैच्योरली रिलीज़ कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया और कहा कि आप देखो कि क्या इन्हें रेमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 15 अगस्त 2022 को गुजरात गवर्नमेंट ने एक कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर 11 के 11 कन्विक्ट्स को इस केस में रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर इसमें कहाँ पर यूज़ आ रही हैं। ऑफ कोर्स गवर्नर ने इनको जो है वो रेमिट किया है। तो पहले तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 161 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के पास पावर्स होती हैं पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिट करने की। तो एडवाइस ऑफ स्टेट कैबिनेट उस केस में जो है वो बाइंडिंग होती है गवर्नर के ऊपर। अब ऑफ कोर्स ये डिसीजन जो गवर्नर का होता है ये जुडिशियल रिव्यू के लिए सब्जेक्ट होता है। इवन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस डिसीजन को जो है वो पलट भी सकते हैं। तो अब हम देखते हैं पहले तो कि पार्डनिंग पावर्स हैं क्या गवर्नर की। पहला तो है ऑफ कोर्स पार्डन, मतलब कि आप सेंटेंस भी रिमूव कर रहे हो और कन्विक्शन भी रिमूव कर रहे हो। कॉम्यूटेशन में क्या होता है कि आप एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से जो है वो रिप्लेस कर रहे हो। रेमिशन क्या होता है? पीरियड ऑफ सेंटेंस को ही जो है वो कम कर देना। उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं करेंगे। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही रहेगी, लेकिन उसकी जो है इम्प्रिजनमेंट का जो है वो टर्म थोड़ा कम हो जाएगा। रिस्पाइट में क्या होता है कि सेंटेंस कम दे देना। ओरिजिनली अवॉर्डेड अगर 10 साल का सेंटेंस है तो 7 साल का सेंटेंस दे देना। रिप्रीव क्या होता है कि किसी की डेथ पेनल्टी के ऊपर जो है वो टेम्पररी स्टे लगाना। तो ये सब पावर्स गवर्नर के पास अवेलेबल है। अब क्या ग्राउंड्स होते हैं क्यों रेमिशन दी जाती है? तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि प्रिजन जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी में जो है पावर्स मिली हुई हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, रादर गवर्नर को, टू रेमिट सेंटेंसेस। एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड बनाना पड़ता है, बट ऑफ कोर्स हर स्टेट में ऐसा नहीं होता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो है ये सेंटेंस रिव्यू बोर्ड के बेसिस पर ही जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स एक्शन लेती हैं। स्टेट्स जो हैं वो आर्बिट्रेरीली कोई ऐसे रेमिट नहीं कर सकती किसी भी सेंटेंस को, बट उनको ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो क्या गाइडलाइंस हैं? ऑफ कोर्स लक्ष्मण नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 ग्राउंड दिए हैं कि किस केस में रेमिशन जो है वो कंसिडर की जा सकती है। पहला तो उन्होंने बोला है कि एक इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम हो अगर जिससे हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो उसमें भी हम जो है वो रेमिशन दे सकते हैं। अगर चांस ऑफ क्राइम दोबारा रिपीट होने का अगर ख़त्म हो चुका है तो भी हम जो है वो रेमिशन दे सकते हैं। अगर कन्विक्ट की जो है पोटेंशियलिटी टू कमिट दैट क्राइम अगेन जो है वो ख़त्म हो गई है तो भी हम रेमिट कर सकते हैं। अगर पर जो है उस कन्विक्ट को प्रिजन में रख के कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है तो भी हम रेमिट कर सकते हैं। अगर कन्विक्ट की फैमिली की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो ख़राब हैं तो भी हम रेमिशन दे सकते हैं। अब इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको एटलीस्ट मिनिमम 14 साल जो है वो सज़ा जेल में काटी होनी चाहिए, उसके बाद ही रेमिशन मिल सकता है। तो जैसे इस केस में 15 साल उनको हो गए हैं, ऑफकोर्स उसके बाद ही जो है वो उनको रिलीज़ किया गया है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो अब आप को पता है कि ये टॉपिक ऑफ कोर्स इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्रीकल्चर सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि इंडिया ने अपना 10% शुगर केन एक्सट्रैक्टेड एथेनॉल जो है वो पेट्रोल में ब्लेंड कर दिया है। 2022 का टारगेट था, लेकिन उससे पहले ही हम जो है इस टारगेट को अचीव कर चुके हैं। एथेनॉल आपको पता है एक एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट है जो कि आपके शुगर से जो है वो आपके शुगर की प्रोसेसिंग करके शुगर केन से उससे ऑब्टेन किया जाता है। लेकिन और भी सोर्सेज हैं इसके जिससे ये ऑब्टेन किया जा सकता है, जैसे राइस हस्क और मेज़। तो इसको ऑफ कोर्स ये एक रीन्यूएबल फ्यूल है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी जो है प्लांट्स से आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हो, जो कि पावर ऑफ द सन को यूज़ करके प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए हम इसको रीन्यूएबल फ्यूल मानते हैं। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए मोलासिस से अदर सोर्सेज भी जो है वो यूज़ कर रही है, जैसे कि आपका राइस स्ट्रॉ, वीट स्ट्रॉ, मेज़ कॉब्स,
कॉर्न स्टोवर, गैस, बैम्बू और इवन वुडी बायोमास जो आपके सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स में आते हैं, उनका भी यूज़ करके जो है एथेनॉल बनाया जा रहा है। सिर्फ अब हम शुगर केन पर ही डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम था क्या? तो 2003 में ये प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने लॉन्च किया था। इनिशियली तो हमारा टारगेट था कि हम 5% ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की, लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने टारगेट को इंक्रीज़ करके कहा कि हम 2022 तक 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर डालेंगे। इसको हमने समय से पहले ही अचीव कर लिया है। तो अगला टारगेट अब रखा गया है कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे हम 2030 तक। लेकिन जब नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली एथेनॉल रोड मैप 2021, तो ये डेडलाइन जो 2030 की थी उसको एडवांस करके 2025 तक कर दिया गया। तो मतलब हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 तक अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये आपके जो है गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक है, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का डेटाबेस है वो सारे यूज़र्स के लिए ओपन कर दिया जाएगा, ऑफ कोर्स बिसाइड्स जस्ट जो पेटेंट ऑफिसर्स जो भी सिर्फ उनको यूज़ कर पा रहे थे। ऑफ कोर्स ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होगा। इस डेटाबेस को जो है एक्सेस करने के लिए आपको पेमेंट देनी होगी। जो भी ऑफ कोर्स कोई बिजनेसेस या एंटरप्राइजेज अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं, और आयुष जो है आपके सिस्टम्स में अगर वो कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं तो उनको एक पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी इसकी। अब इससे आप जब इसको डेटाबेस को ओपन कर दिया गया है तो जितनी भी रिसर्च अभी तक इस आयुष रिलेटेड सेक्टर से हुई है या हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज के से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है उसको हम और ज़्यादा इसके ऊपर इनोवेशन लेके आ सकेंगे। वाइडर अडॉप्शन हो सकेगी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन की, न्यू मैन्युफैक्चरर्स और इनोवेटर्स आ सकेंगे हम, ताकि वो न्यू एंटरप्राइजेस बना सकें। तो हमारे बहुत सारी बिजनेस और कंपनीज़ को इसका फ़ायदा होगा। वो एक सिर्फ पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल से अपने जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या जो भी आप न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वो जो है बनाना चाहती हैं तो वो बना सकेंगी। तो ये TKDL है क्या? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी 2001 में बनाई गई थी CSIR द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी द्वारा। अब इसके अंदर जो है हमारी एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो अब हमारी आयुष से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं या आपके आयुष से रिलेटेड रिसर्च है वो इसमें सेव की हुई है डिजिटाइज फॉर्मेट में, और 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ये आपके इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। तो अब पहले तो हम सिर्फ 14 पेटेंट ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड इन्हीं को सिर्फ एक्सेस दिया हुआ था, लेकिन अब इस एक्सेस को हमने ओपन कर दिया है। धीरे धीरे हम नेशनल के बजाय इसको इंटरनेशनल जो है एक्सेस के लिए भी ओपन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉस्को कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है उन्होंने बोला है कि ईस्ट एशिया में एमर्जिंग सिनारियो जो है वो ग्रेव थ्रेट हो सकता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो ऑफ कोर्स वो मॉस्को कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी को एड्रेस कर रहे थे। तो ये एक कॉन्फ्रेंस है क्या? 2012 से कंडक्ट की जा रही है। ओपन डायलॉग होता है हमारे डिफेंस एजेंसीज का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और मिलिट्री एक्सपर्ट्स का। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इस बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशियन फेडरेशन ने इसको जो है ऑर्गेनाइज किया है, और ये 10th मॉस्को कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। तो इस बार की हाईलाइट्स क्या रही हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर की स्पीच की? तो उन्होंने बोला है कि सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रेड और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल लीगल ऑर्डर जो है इसको फॉलो करना ज़रूरी है। खासकर उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर फोकस रखा है, क्योंकि अब आपको पता ही है कि ताइवान स्ट्रेट में क्राइसिस आने की जो है वो संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि मल्टीलैटरलिज्म का एक फ्रेमवर्क जो है हमको फॉलो करने की ज़रूरत है जो UN चार्टर में दिया गया है, ताकि एनार्की, इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट से हम बच सकें। उन्होंने UN के रिफॉर्म्स के बारे में भी बोला है कि इंडिया 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और UN को इसलिए डेमोक्रेटाइज होने की ज़रूरत है। ये उन्होंने रिग्रेट भी दिखाया है कि इंडिया को डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ UNSC में एक परमानेंट स्टेचर नहीं दिया गया है, मतलब परमानेंट सीट नहीं दी गई है। तो ये एक तरह से उन्होंने उसके लिए रिग्रेट दिखाया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स। तो ये आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए और आपके एग्रीकल्चर सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन स्कीम जो है वो अप्रूव कर दिया है, उसको रिस्टोर कर दिया है, और 1.5% जो है वो लोन 3 लाख रुपए तक के लोन के ऊपर 3 लाख रुपए तक के फार्मर्स को जो ये शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाएंगे उसके लिए 1.5% जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट जो है वो
इंटरेस्ट सबवेंशन देगी, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि सस्टेनेबिलिटी रहेगी, क्रेडिट फ्लो जो है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलता रहेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को तकलीफ नहीं होगी क्योंकि उनके कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो कवर हो जाएंगे, और लोन ग्रांट करने में फार्मर को शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स के लिए उनको दिक्कत नहीं आएगी। जब ये लोन्स ग्रांट किए जाएंगे तो आपकी जो है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़, जिनसे जैसे कि आपका एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, पोल्ट्री, फिशरीज, ये भी जो है इनको भी लोन मिलेगा, तो ये जनरेट करेंगी एम्प्लॉयमेंट। अब जो है टोटल अगर आप देखें तो लगभग फार्मर्स को 4% पर एनम के हिसाब से ये लोन जो है वो उपलब्ध होगा, ऑफ कोर्स अगर वो टाइम पर लोन की रीपेमेंट करते हैं तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो एक्चुअली जो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसको अब मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है वो का नाम रखा गया है, इसमें क्या प्रपोजल था कि शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन 3 लाख रुपए तक के फार्मर्स को उपलब्ध करवाए जाएंगे एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। लेकिन अगर वो टाइमली रीपेमेंट कर देते हैं तो उनको 3% सबवेंशन मिलती है, मतलब उनको 3% जो है वो इंटरेस्ट उनको नहीं देना पड़ता, गवर्नमेंट उनके बिहाफ पर पे करती है। तो इसी में ही जो है 1.5% जो है वो अब, और मतलब जो 1.5% जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो है वो कवर कर लिया गया है, और अब ये इंटरेस्ट सबवेंशन जो है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मिलेगी। 100% ये फंडेड बाय द सेंटर है। तो इफेक्टिवली अगर आप देखो, अगर टाइम पर लोन पेमेंट करते हैं फार्मर्स तो उनको 4% पर एनम की जो है वो ब्याज पर उनको लोन, शॉर्ट टर्म लोन जो है 3 लाख रुपए तक का मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो ये आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंदर 50,000 करोड़ रुपए जो है वो और एनहेंस कर दिए हैं। तो पहले 4.5 लाख करोड़ रुपए डाले गए थे, अब 5 लाख करोड़ रुपए जो है वो उपलब्ध करा दिए गए हैं, और इतने तक के लोन्स जो है वो अलग अलग इंडस्ट्री के सेक्टर्स को मिल सकते हैं। अब ये 50,000 करोड़ रुपए स्पेसिफिकली ईयर मार्क किए गए हैं कि वो जो हॉस्पिटैलिटी और रिलेटेड सेक्टर्स में जो कंपनीज या फिर जो बिजनेसेस हैं उनको ये लोन मिल सकता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उन्होंने कोविड-19 में सफ़र किया है। तो ECLGS आपको पता ही है कि कॉन्टिन्यूइंग स्कीम है, जो है 2020 में ही इसको अनाउंस किया गया था। इस स्कीम की वैलिडिटी बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दी गई है, और इससे अब जो है ये 50,000 करोड़ जो एक्स्ट्रा जो फंडिंग डाली गई है इसके अंदर, उससे आपके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जो है और रिलेटेड सेक्टर्स को जो है वो फ़ायदा मिलने वाला है। अभी तक लगभग 3.67 लाख करोड़ रुपए तक के लोन्स जो है वो सैंक्शन हो चुके हैं। 5 अगस्त 2022 तक का ये आंकड़ा है। अब जो है ये 50,000 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा जो इसमें डाले गए हैं, इससे जो है हॉस्पिटैलिटी और रिलेटेड सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। और ऑफ कोर्स ये आपको पता ही है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो हाई एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी है इसमें, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेजेस हैं इनके बहुत सारे अदर सेक्टर से। तो एक तरह से ये आपके ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी को भी हेल्प करने वाला है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नवरोज़। तो नवरोज़ आपके आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से इंपॉर्टेंट है। तो 16 अगस्त को नवरोज़ या पारसी न्यू ईयर हमने सेलिब्रेट किया है। ये इस दिन होता क्या है कि जो पारसीज़ होते हैं वो अग्यारीज़ या फिर फायर टेम्पल्स में विज़िट करते हैं और अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं, ग्रैंड लंच या डिनर रखते हैं अपने घर पे, और जो है वो गेट टुगेदर करते हैं, ईट और मिंगल करते हैं। पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए इस नवरोज़ को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑन दी विरन। तो ये भी टॉपिक आपके हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, या आप इसको कह सकते हो आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो है कम्युनिकेशन मिनिस्टर को थैंक्स बोला है, बिकॉज ऑफ कोर्स क्योंकि उन्होंने जो है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है वो अब आपके कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप रिलीज़ कर रही है ऑन दी विरन, जो आपके फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम पर 20 अगस्त को, ठीक है। तो ऑन दी विरन जो थे वो एक इंडियन कमांडर इन चीफ थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट तमिलनाडु में लड़े थे। वो अरुंथाथियार कम्युनिटी से को बिलोंग करते थे, जो उनको एक हीरो की तरह दिखती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Bilkis Bano case. So this topic is important for your polity section because we are going to cover a lot of polity related topics in this section. So Gujarat government on 15th of August has released 11 convicts who were accused in the who were convicted in the Bilkis Bano murder and gang rape case of 2002. So what was this case? So on 21st January 2008, a special CBI court in Mumbai had sentenced 11 accused to life imprisonment on the charge of gang rape and murder of 7 members of Bilkis Bano's family in Ahmedabad, Gujarat in 2002. And these convicts have now served more than 15 years in jail
in jail. So that's why one of them approached the Supreme Court with the plea that they should be that he should be released prematurely. The Supreme Court then directed the Gujarat government to look into the issue of remission. Based upon a committee report, the Gujarat government has now remitted and released all the 11 convicts in this case on the 15th of August. So for that, we have to look at the pardoning powers of the of the governor. Of course, it falls under the Article 161 of the Constitution, and you know that the advice of the state cabinet is binding on the governor for the same, and of course, it is also subjected to judicial review. The term pardon here means removal of both sentence and the conviction, and absolving the convict completely from all sentences, punishments, and disqualifications. Commutation means you substitute one form of punishment for a lighter form of punishment, like a death sentence may be commuted to rigorous imprisonment or life imprisonment. What is remission? So it means that you are reducing the period of sentence without changing its character. So a sentence of rigorous imprisonment for 2 years may be remitted to rigorous imprisonment of 1 year. What is respite? Respite means awarding a lesser sentence in place of one originally awarded. So certain circumstances could be there, like a person could be, or the prisoner could be disabled, physically disabled. In that case, of course, respite can be granted by the governor. What is reprieve? Reprieve means you are staying the execution of a death sentence for a temporary period only. Okay, so these are certain powers of the governor. Of course, you know that there are parallels for the president also. Anyways, so what could be the grounds of remission? So you know that prison is a state subject, and under section 432 of the CRPC, the state governments have the power to remit sentences, of course, through the governor. For that, a sentence review board has to be formed, but of course, it is not compulsory because this policy varies from the state to state. But broadly, there is a sentence review board based upon which upon the advice of which the state government takes action, and the states cannot exercise this power of remission arbitrarily, because the Supreme Court has said that these states should follow due process. So what are the guidelines which needs to be followed while granting remission? Of course, these guidelines were enumerated in the Lakshman Naskar versus Union of India case of 2000. The Supreme Court laid down these guidelines, and the first one, of course, says that if the offense is an individual act of crime and it does not affect the society, then remission can be granted. If the chance of crime being repeated in the future does not exist, then also, of course, this remission can be granted. If the convict has lost the potentiality to commit crime, then of course we can grant remission. If the purpose of keeping the convict in the prison is not there, then also remission can be granted. If the convict's family's socioeconomic conditions have deteriorated, or the socioeconomic conditions are not good, then also remission can be granted. But for all these provisions, there is one condition, that they should have at least served 14 years in prison. So in this case, of course, you can see that 15 years have been completed, and now they have been granted remission. So the next topic is ethanol blending program. So this topic is important for your economy and agriculture section. So the Prime Minister has announced that India had met its target of 10% ethanol blending in the petrol ahead of its schedule. So of course we needed to achieve this target before 2022 completion, but we have achieved it much ahead of it. And what is ethanol? So it's an agricultural byproduct. Generally, it is obtained from the sugar cane through the fermentation process. But of course, we are also obtaining it from rice husk or maize, or even second generation biofuels like rice straw, wheat straw, maize cobs, corn stover, bagasse, bamboo, and even woody biomass. So of course it is considered as a renewable fuel because we are generating ethanol from plants which can harness the power of the sun. That's why we consider it as a renewable fuel. So what is the ethanol blended petrol program? It was launched by Ministry of Petroleum in 2003, and initially the target was to blend petrol with 5% ethanol, but later on the target was increased to 10%, which was to be achieved by 2022. We have achieved it ahead of the schedule, and now we
We changed the target to 20% ethanol blending by the year 2030. But later on, when Niti Aayog released the ethanol roadmap report in 2021, that deadline was advanced to 2025. So now the target remains 20% ethanol blending by 2025. So the next topic is traditional knowledge digital library. So this topic is important for your governance section, or more particularly the health subtopic. So Union Cabinet has recently approved the widening of access of traditional knowledge digital library to all the users, besides of course the 14 patent offices who were authorized to access this database. Of course, it would be a paid subscription model whereby the businesses or enterprises can access this information of TKDL. Or TKDL database by paying a subscription fee, and this will allow them to research and develop and also innovate and launch new products, pharmaceutical products or nutraceutical products also. It will facilitate wider adoption of Indian traditional medicines, and it will propel new manufacturers and innovators to gainfully build enterprises based upon the valuable knowledge heritage that has been documented in this TKDL platform. So, of course, this database was created in 2001 jointly by the CSIR and Department of Indian Systems of Medicine and Homeopathy. It contains information from existing literature, and it's a first of its kind globally. All the database has been documented in a digitized format in 5 international languages. Earlier, it was just restricted for use by 14 patent offices worldwide, but now it will be open for all. Anybody can get access to it. Initially, it will be available for the national companies or national users, but slowly the government is planning to open it for international users also. So the next topic is Moscow Conference on International Security. So Defense Minister Rajnath Singh has said that a geopolitical fault line in the maritime domain in East Asia has opened up, and it could pose a graver threat to the world. So he was signaling about the Taiwan Strait crisis, which could happen anytime soon. So he was addressing the Moscow Conference on International Security. So this is held annually since 2012. It's a platform for an open dialogue of defense agencies, international organizations, and military experts. This year, Ministry of Defense of Russian Federation has organized this 10th Moscow Conference on International Security. So what are the key highlights of his speech? So he has said that sustainable maritime trade and economic practices, resilient infrastructure, and adherence to global legal order is the key to have a free, open, secure, and inclusive Indo-Pacific region. So he was basically highlighting the Taiwan Strait crisis where China is flexing its muscles. So he has said that we all should abide by the UN Charter, which is a framework of multilateralism, and it is a bulwark against anarchy, instability, and higher chances of conflict. So he also stressed about reforming the UN systems because it is not yet democratic. Because India represents 1/6 of humanity, it should have a permanent say in the decision-making structure of the UNSC. So the next topic is short-term agricultural loans. So this topic is also important for our economy and agriculture section. So Union Cabinet has recently restored the interest subvention scheme on the short-term agriculture loans, and now 1.5% interest subvention would be given to all financial institutions. Remember, it would be given to financial institutions, not to the farmers directly. And this interest subvention will be provided to lending institutions for the financial year 2022-23 and to 2024-25 for lending short-term agricultural loans up to 3 lakh 3 lakh rupees to the farmers. So of course, it will ensure sustainability of credit flow in the agriculture sector. The banks would be able to absorb the increase in cost of funds, and they would also be encouraged to grant loans to the farmers for short-term agricultural requirements, because it would also cover other allied activities related to agriculture like animal husbandry, dairying, poultry, fisheries, etc. So it will also generate much employment also. So effectively, the farmers would be able to get short-term loans at the rate of 4% per annum if they repay the loan in time. So what is the background of this scheme? So of course, the interest subvention scheme, now it has been of course renamed as modified interest subvention scheme. It was announced
with 3 lakh rupee up to loans up to 3 lakh rupees for farmers, and the effect if and the real rate of interest was 7% per annum. But if the farmers paid their loans promptly and repayments were made on time, then additional 3% subvention was made available to them. So effectively they had to pay only 4% of interest on their loans that have been taken by them. So this 1.5% additional incentive is being given to the financial institutions, because the cost of funds have now been increased and the government wants to provide them interest subvention, so that financial institutions can be encouraged to forward more short-term loans to the farmers. This scheme would be 100% funded by the center only. So the next topic is Emergency Credit Line Guarantee Scheme. So this topic is important for our economy section. So Union Cabinet has recently enhanced the limit of Emergency Credit Line Guarantee Scheme, that is the ECLGS, by 50,000 crore rupees. Now the total fund in this ECLGS would be 5 lakh crore instead of 4.5 lakh crore earlier. Now the 50,000 additional support would be 50,000 crore additional support would be earmarked exclusively for the hospitality and related sectors, because they have suffered the most during the COVID-19 pandemic. So of course you know that ECLGS is a continuing scheme. It was announced during the COVID-19 pandemic, and now this scheme has been extended to March 2023. So it would provide much needed relief to the enterprises operating in the hospitality and related sectors. About 3.67 lakh crore rupee loans have already been dispersed under the scheme, and now this 50,000 crore extra loans would be made available to the enterprises who are involved in the hospitality and related sectors, because they have high employment intensity and their direct and indirect linkages would help us in overall economic recovery. So the next topic is Navroz. So this topic is important for your art and culture section. So on 16th of August, the nation has celebrated Navroz, or the Parsi New Year, which is a harbinger of peace and prosperity. On this very day, the Parsis visit the Agyaris, or the fire temples, to offer prayers, and they organize grand lunch and dinner with the best and finest variety of Parsi cuisine. They also get together, eat and mingle on this occasion. So the next topic is on the Viran. So this topic is also important for your history, or you can say art and culture section. So Minister of State for Information and Broadcasting has expressed his gratitude to Communication Minister for authorizing a release of commemorative postal stamp on freedom fighter on the Viran. It will be launched on 20th of August, of course, and he was an Indian commander-in-chief who fought against the British East India Company in Tamil Nadu, and he died in 1771 fighting the British. He came from the Arunthatier community and is viewed as a hero by them. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.